In a sensational statement, former Punjab Chief Minister Charanjit Singh Channi has likened Khalistan sympathizer Amritpal Singh's confinement in jail to an emergency-like situation. While speaking in Parliament today, the Jalandhar MP has said that Amritpal Singh, who's currently behind bars after being booked under NSA charges, amongst others, cannot raise the voice of his constituents, the 20 lakh people who have voted him. And in fact, this is like an emergency-like situation, is his claim. Listen in. ये कहते हैं कि जी हर रोज इमरजेंसी की बात करते हैं कि इमरजेंसी, लेकिन जो देश में आज अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है उसका क्या है? इमरजेंसी ये भी है कि 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो एनएस से लगाकर अंदर रखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहां नहीं रख पा रहे, ये भी इमरजेंसी है। BJP has excoriated the former Punjab Chief Minister for his advocacy of a secessionist and a terror accused. The Saffron Party leaders have called out Congress for its history of backing separatist elements. ये तो कोर्ट में है मामला और गंभीर स्वरूप का आरोप है उनके ऊपर। ऐसे पार्लियामेंट में बात करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है और वो कांग्रेस पार्टी में है। कांग्रेस पार्टी ने इतिहास में किस किस का कैसे उन्होंने छीना था, ये सब अभी सबके सामने है, देश के सामने है, दुनिया के सामने है। कौन आपातकाल का, वो तो आपातकाल में वो नहीं थे, इसीलिए उनको आपातकाल क्या होता है पता नहीं है। इधर तो डे इन एंड डे आउट सरकार को के ऊपर क्रिटिसिज्म होता है। जितना प्रधानमंत्री जी के ऊपर टिप्पणी करते हैं सदन में बाहर, इतना तो आपातकाल में कर सकते थे क्या इंदिरा जी के बारे में? ये चन्नी के बयान पर मैं इतना ही कहूंगा कि इंदिरा गांधी का हत्यारा खालिस्तानी और खालिस्तानी का समर्थन कांग्रेस का, बाहर कांग्रेस जय चन्नी, ये भारत की संप्रभुता पे हमला है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। BJP might be frothing in the mouth, but opposition leaders have their lips sealed. The very same leaders who had staged the Safe Constitution protests with copies of the Samvidhan in their hands have been silent on this endorsement of forces that go against the sovereignty of India when they ask for Khalistan. चरणजीत चन्नी जी ने की बोलना है पार्लियामेंट से तो उन्होंने का हुआ है, जब तक कांग्रेस का स्टैंड की है, क्योंकि अद्धी कांग्रेस कुछ होर बोली जाती है, अद्धी कांग्रेस कुछ होर बोली जाती है ना। सो ये उन्होंने का स्टैंड है, पर साडे वालों ये है कि पंजाब दे विच लॉ एंड ऑर्डर नूं मेनटेन करने वास्ते जो साडे असीं अपने वालों एफर्ट्स कर रहे, क्योंकि मैं कल्ला किसी खास MP का नहीं, मैं 3.5 करोड़ लोगों का कस्टोडियन हाँ। There's breaking news coming in. Amrinder Singh Raja, Vading Congress MP, has spoken on Channi's remark. He says, we are not pro-Khalistani, we are Hindustani. Listen in. So, Mr. Waring, also there is a big question whether Congress is with, Khalistani sympathizers, as Mr. Channi has evoked Mr. Amritpal, saying that he has been chosen by 20 lakh people. I will react to that. I don't know what Mr. Channi is saying. To be very honest, I have not heard that. But we are not pro-Khalistani at all. We are Hindustani and we love India and we are Hindustani. Would you say that is an individualistic stand of Mr. Channi when he spoke about Amritpal? Of course, if he said something about this Khalistani or something like that, that is his individual statement. But I have not heard that what he said exactly. But we are not. We don't like that anybody says that who likes Khalistan. We are Hindustani and we love Hindustan and we love Hindustani people. Thank you so much for speaking to us. And we're now joined by MS Bitta, Chairman of the All India Anti-Terror Front. Mr. Bitta, thank you so much for joining us here on Times Now. Sir, my first question, it's rather strange that Mr. Channi, who has held a very, very responsible and important constitutional post of Chief Minister, is making
making this kind of a statement supporting Amrit Pal, because not only in Punjab or the state where Congress has lost several leaders to terror, here you have also several leaders at the central level, and at the end of the day giving endorsement to separatist elements is going to raise some serious questions, Mr. Bitta. देखो, मैं आपको एक बात स्पष्ट कह दूं, हम भुक्तभोगी हैं। 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ है। 36,000, 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम हुआ है। 84 के दंगे हुए हैं। इंदिरा गांधी को शहीद किया गया है। चीफ मिनिस्टर सरदार बेअंत सिंह को शहीद किया गया है। क्यों ये सब हुआ? सवाल पूछना चाहता हूं। मैं आज भी कांग्रेसी हूं, पहले भी था, आज भी हूं, पर गंदी राजनीति से दूर हूं। और पंजाब के ऊपर, पंजाब की अमन शांति के ऊपर जो हजारों लोगों की शहादत हुई, मैं उसके ऊपर निगाह रखता हूं। मैं वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं करता हूं। 14 बार बम मैंने सहे हैं। किसने तैयार किया था भिंडरावाला? कौन लाया था भिंडरावाला? अकाली दल को खत्म करने के लिए एक भिंडरावाला तैयार किया गया। क्या किया भिंडरावाले ने? हरमंदर साहब को किला बना दिया। पंजाब के बाहर, पंजाब में लोगों को मारते थे और हरमंदर साहब को किला बना देते थे। आज क्या ये फिर भिंडरावाला तैयार करना चाहते हैं? चन्नी को सवाल पूछना चाहता हूं, गंदी राजनीति को छोड़ो। ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना सीपीएम, ना सीपीआई। प्रथम राष्ट्र, तेरा वैभव अमर रहे, मां हम दिन चार रहे ना रहे। चीफ मिनिस्टर शहीद क्यों हुए? ये खालिस्तान के नारे लगाते हैं। लेकिन ये गंभीर बात सुनिए, पहले जी बात सुनिए। कौन है ये अमृतपाल? वो अमृतपाल पन्नू का सपोर्टर। कौन पन्नू? आईएसआई का एजेंट। कौन पन्नू? जो तिरंगे झंडे का रोज कनाडा, अमेरिका, यूके में अपमान करता है। वो कहता भारत के टुकड़े करेंगे। आप निकालिए, उनकी वीडियो निकालिए, पन्नू की निकालिए। अमृतपाल को जब अरेस्ट किया गया, पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने अमृतपाल की फेवर में प्रोटेस्ट किए, लेकिन सरकार के खिलाफ किए। बेटा साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये ऑफ कोर्स एक जिम्मेदार पोजीशन में रह चुके हैं, ये चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, तब भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। और रोजाना हम देखते हैं कि किस तरह कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं सवाल उठाती है कि वहां की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, वो इन खालिस्तान फोर्सेस को कहीं ना कहीं उनको सिंपैथाइजर बन रही है, उनका अपीजमेंट कर रही है। लेकिन इस तरह का स्टेटमेंट क्या कंपेटिटिव अपीजमेंट चल रहा है पंजाब में? देखो, मेरी बात सुनो। मैं फिर कहा, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना सीपीएम, ना सीपीआई, ठीक है ना। जहां तक भगवंत मान ने अभी क्या कहा, मैं 3.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा हूं। उसने अमृतपाल के हक में तो कुछ नहीं बोला। ये कौन आगे बीच में बोलने वाले? इनके हाथों से बेगुनाहों के कत्लेआम हुए। अभी जख्म अल्ले हैं। मेरे अगर शरीर में देखो ना, 14 बार हमलों से जो बम से मेरा शरीर तोड़ा इन्होंने, मुझे जनाब फूलों की तरह लगती है, दर्दे फूलों की तरह, क्योंकि मेरी राष्ट्र के लिए लड़ाई थी। पर दर्द आज मेरे शरीर पे होता है जब चन्नी जैसे एक चीफ मिनिस्टर, मेरे साथ यूथ कांग्रेस में काम किया इन्होंने किसी वक्त, आज ये कहें, नहीं, एक सुनिए, कहें 20 लाख लोगों का नुमाइंदा। मैं कहता पूरा हिंदुस्तान एक हो जाए। इसको जताने के लिए अमृतपाल में हक लिए। मेरा हिंदुस्तान, मेरा भारत मां, पहले भारत प्रथम राष्ट्र, राष्ट्र प्रथम। फिर मैं 1 करोड़ 10 लाख लोग, 10 करोड़ लोगों की बात करूंगा। कमाल है, हिंदुस्तान को धर्मशाला समझ रखा है। पार्लियामेंट के मेंबर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ। 20 लाख लोगों से जीत के तो हम क्या करें? कल को 20 लाख लोग, कल को पूरा पंजाब इनको जता दे, तू चीफ मिनिस्टर बन जाएगा तो हम मान जाएंगे। ये क्या कहेंगे, कल को खालिस्तान बनाएंगे, हम मान जाएंगे? किसी सूरत में नहीं खालिस्तान बनेगा, याद रखिए। ओके, हमारे साथ जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। MS Bitta ji, you have of course articulated that emotion very strongly. Thanks so much for joining us. Let's quickly take this across to our other guests who are with us. With us now is SS Channi, spokesperson of the BJP. Pankaj Sharma, political analyst, is with us. Pankaj Sharma, you must have heard Mr. Bitta there, extremely impassioned, but clearly, of course, this is something that has caused a huge amount of concern. How can somebody who's not just an elected MP, but also a former chief minister, talk this kind of language about an individual who's charged with promoting secession? And there is the NSA that has been invoked. There are multiple cases against this person who ultimately has shown time and again that he has picked up the gun, that his supporters even will not shy away from violence.
So Amritpal Singh certainly has a right to participate in the parliamentary proceedings as an elected representative, as all the imprisoned people have full rights to utilize all the available constitutional forums and avenues. Amritpal also should be given his right to attend parliament. But I would say that Charanjit Singh Channi is wrong when he says that Amritpal enjoys the support of 2 million people. This is fallacious. A responsible leader from the main opposition party who has been a chief minister should not try to glorify Amritpal by stating untrue facts on the floor of the House. Khadur Sahib parliamentary constituency, from where Amritpal has been elected, does not even have these many total electorate, 2 million. In 2024 elections, only 10 lakh people went to vote, and out of them, only 4 lakh voted for Amritpal. No, but Mr. Pankaj Sharma, I am not on the issue of course, there are several facts wrong and several things problematic of what Mr. Channi has said. But the most disturbing aspect is this, that you have a person who's a former chief minister, and you have an Aam Aadmi Party government that has been time and again accused, and it's public information, of being soft on such elements. And now are we looking at a competitive appeasement taking place in Punjab? Because why is Mr. Channi giving this kind of long rope to Amritpal, somebody who clearly believes in Khalistan? So I am saying Channi shouldn't have done this. But there is another pertinent question. Amritpal was in Dibrugarh jail under NSA. If the government has no law banning a person detained under NSA from fighting an election, it is not Amritpal's fault. Now, if he can file nomination while in jail, contest while in jail, why can't he be allowed to take part in parliamentary work? Well, sir, that is a very difficult question. There is also engineer Rashid who has been accused in terror charges. Let me bring in SS Channi. SS Channi, क्या ये मामला इतना सिंपल है? अगर लोग उनको चुनते हैं तो उनको पार्लियामेंट में आके पार्लियामेंट्री प्रोसीजर और पार्लियामेंट्री प्रोसेस का भाग लेना चाहिए. This is the statement coming in at this point of time from Mr. Pankaj Sharma. How would you respond to him, Mr. Channi? देखो माधवदास जी, कोई भी criminal, and there have been too many criminals who have been elected in the past, but he's facing the law. He's facing the National Security Act, the case against him. It's not only one case. There have been 20 cases pending against him and the Wars Punjab the people. So he while merely getting elected and again his election has also been challenged, that he has used the religious card. Just being elected, he is not, in a position to ask for his, and his case is also pending in the Honorable High Court. There is a challenge. So he doesn't get any right to be in the Parliament. On the other hand, he took oath under the Constitution. And he again took oath under the Constitution while he took oath in the two times, while filing the papers and then taking oath as Member of Parliament. And his mother gave some statement that please take care of him. He is going to abide by the law. And again, he gave another statement by his own accomplice or maybe people who are representing Wars Punjab that he can disown the family, but he won't disown the Khalsa Raj. So there are people who believe in the separatist kind of, and they are the great secessionists in the country. And it's very, very unfortunate that a person like Channi, again, he was an accidental chief minister. He was not the chief minister. Rather, I would say that he should also be booked because the real face of the former chief minister, Mr. Charni Channi, has come out, and he was literally involved while during the, when the Prime Minister was supposed to attend a rally in Firozpur, that there was planning by the ISI and other people to maybe assassinate him or definitely an assault against the Honorable Prime Minister. Well, very, very shocking comment indeed. And of course, this has certainly sparked off a massive controversy. Perhaps with this statement, Mr. Channi also for his own party and his own constituents, certainly, of course, it's something that they've distanced from. We'll have to see the ultimate fallout and whether Mr. Channi will in fact roll back or take back the comments that he has made on the floor of the Parliament. Mr. SS Channi as well as Pankaj Sharma, thanks so much for joining us this evening.